goal is to have the highest revenue at the end of round 10. And you will be playing the role of a leader of a nation, okay? Throw the dice. So when you start, name your nation, be creative. You start with 1 free capital at your start position. This is a ×3 multiplier, so you get 3 units of revenue every round for this. And your opening budget is 5. फैक्ट्री पे रुकना पड़ेगा, 2 में तो बहुत मतलब जैसे 3 से ज्यादा करते वो डिजास्टर में चला गया। One tree absorbs just 20 kgs of carbon dioxide in 1 year. तो माइंडफुल कंजम्पशन की जर्नी में कोई भी रेफरेंस नहीं है कि अगर आप X कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं, Y कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। जो चीज आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड कर रहा है वो आप कीजिए। Both the session have been wonderful, I will say. There are the thoughts that we have, in daily life never comes to our mind, how we can reduce our carbon footprint or how we can work towards the Mother Earth. But the kind of thoughts that it has come to in the session and reflected by us through this participation, it has been a wonderful experience. आज का सेशन बहुत अच्छा था। पहला सेशन जो हमारा था, जो गेम चेंजर वाला था, तो ये हमें दिखाता है कि एक इंडिविजुअल का थॉट क्या रहता है और वो कितना हमारे अर्थ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो सेशन तो रियली बहुत इन्फॉर्मेटिव था और वो थोड़ा सा स्ट्रैटिकल थिंकिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी हमें बताता था। सेकंड वाला था हमारा माइंडफुल का सेशन था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत यूज़फुल था ये सेशन, जहाँ पे ये बताता था कि हमारी एक छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा प्रभाव धरती पे ला सकती है। बहुत मीनिंगफुल था। आई थिंक मैं छोटे छोटे चेंजेस अपने लाइफ में स्टार्ट करूँगा। It was a nice reflection for us on how well we are doing on this carbon footprint and what are we creating. But also, I think it provides us a nudge to make our change in our lives. So in this session I got to know many things around my carbon footprints and the emissions which happen around and the tiny actions which we can take in our day-to-day life which can create gigantic ripples around in. How we can reduce the carbon footprints by the smallest of the smallest actions which we can take up in our day-to-day life.